Okay, so children, today we are going to cover the topic binary file in file handling. So far we have seen that how to make the text file in the file handling using Python coding, and apart from the text file, we are now going to handle the binary file with using Python code. So binary file, you know, anybody know what is binary file? Any idea? Please tell one of you that what is binary file. Fast. Anybody? Yes, correct. So today we are going to see about the binary file operation. So far we have seen all the read write function using the text file. We are creating the text file, we are viewing the text file using the write and read function. Now we are going to see how to handle these binary files. You know that as the Rahul told that binary file contains the text into zeros and one form. Can you name the file type which consists of binary details, binary data? Anybody? See, the files like zip file, audio file, video file, JPG file, all these files are the files data stored in the zeros and one form. Means if you open this file in the normal text editor, you can't read this data properly because it appears in some other unreadable character. ठीक है ना? So ये फाइल का हमारा बाइनरी फाइल में स्टोर होते हैं. अब हम ये देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग में हाउ टू क्रिएट द बाइनरी फाइल and how to open the created file. ठीक है? So for handling the binary file, there is a module in Python called pickle module. What is the name of module? Yes, Pooja. What is the name of module which is used to handle the binary file? Pickle module. So we are going to see the using pickle module how to read and write file in Python. Okay, so let us see one program. The term, before making the program, the two terms must be clear in your mind. That is pickling and unpickling. Okay, so pickling means what? Pickling is the process of converting your data or structure into byte string. Byte string. See, I will write here pickling. Pickling means, suppose your data is structured, it is in form of list or dictionary. This is converted using pickling in the form of byte string. ठीक है? Byte string. जो बाइनरी ऑपरेशन में जो बाइनरी फाइल जब आप हैंडल करेंगे तो इन टर्म्स को आपको जानना होगा कि हमारा पिकलिंग क्या होता है. बेसिकली इन पाइथन our data, our information is in the form of list and dictionary. So this list and dictionary, the common term used for this list and dictionary is a structure. So finally the structure will be converted into byte string before writing on the file, because the information which has to be written on the file, it is stored in somewhere in the computer hard disk. So we want to store our structure, means list or dictionary, into the file before storing on the file this structure. You have to convert this, and that conversion process is known as pickling into byte string. Byte means flow of information, zeros and one. Okay, byte string. So all the informations are converted into bits and bytes, you know. So this pickling is the process of converting your information, Python coding, Python data structure into byte string. And just the reverse of that is known as unpickling. Unpickling. These two terms should be in your mind. Unpickling means the byte string. This operation is performed in using write function. Means this process is known as writing, write operation. Write operation में क्या होता है? जैसे हम फाइल बना रहे थे, we were saving the contents onto the file. ये write operation में होता क्या था?
जो भी हम इंफॉर्मेशन यहाँ टाइप करते थे, प्रोग्राम के थ्रू देना चाहते थे, वो हमारा फाइल पे स्टोर होता था। तो ये प्रोसेस हमारा राइटिंग प्रोसेस पिकलिंग कहलाएगा। पिकलिंग प्रोसेस यानी कि फाइल पे डेटा को राइट करना। क्या राइट करना? लिस्ट या डिक्शनरी। अभी तक हम क्या राइट कर रहे थे? एक स्ट्रिंग, एक लाइन का डेटा हम इनपुट देते थे और उसको फाइल पे सेव कर देते थे। एक स्ट्रिंग लेते थे, आपका नाम, आपके दोस्त का नाम या 5 स्टूडेंट्स का नाम, कोई भी information which is in the form of string, that we have already seen how to write the string, how to store the string on the file. ठीक है? So particular string, we are not talking about the particular string or a particular line. We are talking about a complete list or a dictionary. So this complete list and dictionary has to be stored on the file. How to store this list and dictionary on the file? Using this binary file operation method. So two term pickling is process of writing the file or converting into byte stream, and after converting it will store on the file. And just reverse that, unpickling means read operation. In read operation what we do? Data is stored in the file and we recall in the computer's memory and then it is viewed. You give a command to view the data. So data is printed or displayed from the file to computer's memory, then on screen. So that process, this read, in the read process, this thing is happen. So unpickling is basically, it is containing the read operation. जो read फंक्शन काम करता है, रीड ऑपरेशन में जो हम काम करते हैं, रीड फंक्शन के द्वारा जो काम किया जाता है वो अनपिकलिंग होता है, और राइट फंक्शन के द्वारा जो काम किया जाता है वो पिकलिंग कहलाता है। सो रीड फंक्शन क्या काम करता है? हमारे फाइल के कंटेंट्स को वापस प्रोग्राम पे लाके, कंप्यूटर मेमोरी में लाके हम उसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है? सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अनपिकलिंग। ओके, सो नाउ लेट अस सी वन प्रोग्राम or for this, to handle this binary file, you know that there are various libraries and modules in the Python. Using this module we perform the function. So for this function, understand properly, whenever we want to handle the binary file, always you must use a module called pickle module. Okay, which module? Pickle module. So this is a module and this is stored, this contains all the necessary functions required to handle the binary file. Means binary file पर हम क्या काम करना चाहते हैं? रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, और ये सारा काम करने के जो फंक्शंस हैं, they are defined under this pickle module. जैसे related to mathematical function, हमारा कौन सा मॉड्यूल था राहुल, हिमांशु? related to mathematical function हम कौन सा मॉड्यूल यूज करते थे? math module. Good. So similarly, to handle the binary file, we have a module called pickle module, है ना? So in the very starting line, whenever you write a program to store the file, okay, to read the file, to write the file, you have to include this statement that import pickle module. Okay, so let us see one program. Using this pickle module, we will make a program binary file, and then after creating the file, we will perform the read operation, the contents which has saved, how to read that. Okay. So one thing more, the two important functions which are included in this pickle modules are load function and dump function. ठीक है, इसको उल्टा लिख लीजिए, पहले dump लिखिए फिर load. यस हिमांशु, कौन कौन से फंक्शन है बोलिए? This pickle module contains two important functions, that is dump function and load function. Yes Satyam, are you able to see what are the two functions which are included in the pickle module? बताइए सत्यम, जल्दी बोलो। सत्यम, अनीशा,
अनीशा बताइए जल्दी। यस, डम्प फंक्शन एंड लोड फंक्शन। सो व्हाट इज द यूज ऑफ डम्प फंक्शन? लिसन, in one line I am telling you, and this question is very important for your board examination. 3 marks questions will be coming in the examination using pickle module. फाइल हैंडलिंग चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और 3 नंबर का प्रोग्राम बोर्ड में आना है। So every student must understand carefully, please listen carefully how to perform, how to use these functions. So this dump function का काम क्या है? जो पिकल मॉड्यूल के अंदर में ये दो फंक्शन है, this dump function is used to write on the file, to write the object, ठीक है? dump function क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट को राइट करेगा। What is here object? Object means any sequence of Python like list, dictionary, tuple. These are the object. So whenever we want to store the information in the form of list, dictionary onto the file, we must use dump function, which contains under pickle module. And the saved file, जो मतलब ये किसका काम कर रहा है? किस फंक्शन का काम कर रहा है? जो टेक्स्ट फाइल में हम जो फंक्शन यूज करते थे उसकी जगह पे ये किस फंक्शन की जगह काम कर रहा है? ये अनीशा बताओ। हम फाइल, हाँ राहुल बोल रहे हो क्या? कुछ बोलो जल्दी बेटा। राइट फंक्शन, गुड। सो दिस dump function performs the task same as write function, and load function perform the task same as read function. In the read function, what happens? The file, the contents are loaded from hard disk to memory, yeah, program. So this load function is to read object, to read the object. Now using this read, load and dump function, we are going to write a simple Python program how to use this dump and load function. Using this load and dump function, we are going to see a very simple program that will make you more clear before performing some advanced level programming. So please note down in your copy, all the students, that pickle module, dump function and load function. Then I am writing a program to write a particular structure or a particular list on the file. एक लिस्ट हम बनाएंगे, उसको फाइल पर हम सेव करेंगे जब, और उसी को हम रीड करेंगे। तो लिस्ट में क्या कंटेन करता है? There is many informations are there in the list, not only one text. It contains group or number of information that contains a big structure. So this binary file stores a big structure data, big data. Okay, so let us see how to write a program using these two function. यहाँ दिखाई दे रहा है सबको ना? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? What I told you, to start the program. Now our purpose is to use the load function. Before using the load function, you must use the dump function. मतलब फाइल को खोलने से पहले फाइल बनी होनी चाहिए ना? तो फाइल बनाने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? कौन सा यूज करेंगे? जल्दी बताइए। Dump function, yes. So let us see one program. All of you write in your copy this program. Import pickle. This is the very first line. Whenever you use the binary file operation, you should write import pickle. Then since we want to perform the write operation, write define one function we have to write. एक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं जिसका नाम रहेगा write data, और इसको फंक्शन को क्लोज यहां बना देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? Now we are under this module, we have defined a function named write data. This function name can be anything. Now we will open the file, create a file string, open. Now the file which has to be created, in the file mode you have to give the name of file. Now we are going to handle, since we are going to handle the binary file, so listen the things, what all things
what are the difference between text file and binary file in this mode. Okay, here you will write the name like binary data, any file name, binary data dot dat, okay, then comma, which mode should I select here? What should I write here to perform the write operation? What mode we write here, Rahul? W. Since the file is, so W is written only in case of text file. Now we are going to handle the binary file. So what we will write here? W. Anybody? Yes, please. WB, correct. WB. B for binary. So this mode you should always write. If you are excluding this, error will produce. So do not forget to write WB, not simply W. WB. And here dot .dat, this extension represent that the file which will be created in the computer will be in the form of binary. Binary means unreadable character, जो आप रीड नहीं कर सकते हो. डायरेक्टली ओपन करोगे इस फाइल को तो आप उसको रीडेबल नहीं होगा, कुछ अनवांटेड कैरेक्टर में या 0 1 होगा, आप पढ़ नहीं पाओगे इसको. ठीक है ना. But then what is the significance? Why we are creating this file in binary mode? Why we are creating? As I told you that we are not able to read this file directly, then why we are making this file? Is there any significance? Anybody? Imanshu? What is the advantage of binary file? Fast. Anisha, Rahul, Pooja, Divya, anybody? बाइनरी फाइल का सिग्निफिकेंस क्या है? अनीशा, आर यू? हाँ, स्पीक लाउडली. यस, योर आंसर इज करेक्ट. स्पीक. हाँ, इट इज easy and fast because no need to convert this file further in computer to make it understandable. Because, so it is fast, the processing become fast, the language is easy. So always we try to make the binary file. Then after opening this file in the write mode, we have to use this. We will create a list. आप चाहे लिस्ट बनाइए, चाहे डिक्शनरी बनाइए. लिस्ट और डिक्शनरी में बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते हैं, तो एक बार में पूरा का पूरा लिस्ट और पूरा का पूरा डिक्शनरी, complete dictionary may contain 10 students detail, 20 student detail, so that complete details will be stored at once in one go on the file आपका जहां भी सेव है, इस नाम से सेव कर रहे हो, उस फाइल पे पूरा कंटेंट्स वो सेव हो जाएगा, चाहे वो डिक्शनरी के रूप में हो, चाहे आपका लिस्ट के रूप में हो. So before applying this command, ओके, फर्स्ट यू मेक ए डिक्शनरी. एक लिस्ट बनाते हैं, इसमें 5 सब्जेक्ट नाम लिखते हैं, सपोज कंप्यूटर, ठीक है, देन फिजिक्स, ठीक है, देन केमिस्ट्री, कॉमा, और एक सब्जेक्ट डाल दीजिए मैथ. ठीक है, ये हमारा एक लिस्ट हो गया. ठीक है, लिस्ट हम बना लें. अब इस पूरे लिस्ट को हम फाइल पे हम क्या करना चाहेंगे? राइट करना चाहेंगे, सेव करना चाहेंगे, बाइनरी फाइल पे सेव करना चाहेंगे. तो आपको कमांड अप्लाई करने से पहले लेट मी टेल यू सिंटेक्स, रूल, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, संरचना, ढांचा, फॉर्मूला, जो जिसको आपको अप्लाई करना है. हमको किसी चीज को किसी को लोड करने के लिए, मतलब डाटा हमको फाइल पे सेव करना है, तो कौन सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे? हम लिखेंगे हम पिकल डॉट डंप, यहां लिखना कंपलसरी है, और ब्रैकेट के बीच में हम लिखेंगे यहां स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा तो बीच में लिख देता हूं. जल्दी से देखिए कैसे हम फाइल को लोड करेंगे. पिकल डॉट डंप. Now here we are using the dump function to write the file, to write the contents on the file. Dump के बाद यहाँ लिखेंगे structure and then a comma file. Okay, file object. Yes. Now see, the same format we will apply in the command, in the program, in this given program. So here we will write, as you know that
this list has to be written on the file. So using this dump function we will write. So see the syntax of dump function. We will write here pickle dot dump. Then here structure. In place of structure object, it can be anything: list, dictionary, tuple, all the content that sequence of Python can be written here. इसमें से structure की जगह पे कुछ भी हो सकता है, list भी हो सकता है, dictionary भी हो सकता है, tuple भी हो सकता है. So in our program, what we have taken here, हम लोग अपने प्रोग्राम में क्या यूज कर रहे हैं? क्या यूज कर रहे हैं? Yes, Himanshu, speak loudly. List. Yes. So we will write here list. List का नाम क्या है? LIST या 1 दे देंगे तो 1 लिखना पड़ेगा, जो भी नाम होगा. कॉमा क्या लिखेंगे? फाइल ऑब्जेक्ट. फाइल का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? F है, तो यहाँ पर F लिख देंगे. ठीक है. अब इससे क्या हो रहा है हमारा? Using this dump function, this list will be written, saved, stored on the file name binary data.dat through this file handler or file object. ठीक है. इसके बाद लास्ट प्रोग्राम क्या रहेगा? लास्ट में ऑलवेज द लास्ट लाइन ऑफ ए फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम क्या होता है हमारा? यस दिव्या, क्या लिखते हैं हम लोग? क्लोज. कैसे लिखेंगे? f डॉट क्लोज. ये हमने क्लोज कर दिया फाइल को. तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? यूजिंग dump function under pickle module we have stored the list into the file binary.dat. Now this file, you can open this file and see from the menu. you आप क्लिक कर दीजिए फाइल ओपन और आप फोल्डर पे जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा आपको फाइल आपका. लेकिन फाइल का जो कंटेंट्स है आपको इस रूप में नहीं दिखेगा, आप पढ़ नहीं सकते हो, ऐसा दिखेगा. ठीक है. सो इस तरह से हम क्या करते हैं? डंप को यूज करके फाइल को राइट करते हैं. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड नाइसली द यूज ऑफ डंप फंक्शन. So last 1 minute, if you have any question related to the file handling, how to handle the binary file, how to use the import to pickle module, and how to use the dump function to write the file, please ask. Or if you have understood, then we can leave the class. Any question? Anybody? Any question? Please see the program. If you find any problem in any line, please ask. Are you able to see this program properly? हाँ, लास्ट लाइन कौन सा? ये वाला? कहाँ से? बोलो जल्दी बोलो पूजा. हाँ, पिकल डंप से. तो पिकल डॉट डंप, पिकल के साथ में हम डंप फंक्शन लगाते हैं. जैसे मैथ मॉड्यूल आप यूज कर रहे थे ना, मैथ डॉट sqrt फंक्शन, उसी तरह से पिकल डॉट डंप और फिर ब्रैकेट के अंदर में जो चीज राइट करना है, ये लिस्ट हमको राइट करनी है और किसके थ्रू? फाइल के थ्रू. तो लिस्ट कॉमा फाइल. ठीक है. समझ आया? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? Okay then, thank you so much. Okay children, thank you so much. We will continue in the next class. We will see how to perform the read operation. Okay.